Do you know how did the Ellora cave was found? The Ellora caves were found by the British officer called John Smith. The caves were first discovered in 1819 when John Smith, a British official, accidentally stumbled upon the horseshoe-shaped rock while hunting a tiger. After studying the artifact, it was concluded, the historian and archaeologist, that these caves had a connection with Venkataka dynasty. एलोरा गुफाएं की खोज पहली बार 1819 में हुई थी, जब एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम जॉन स्मिथ एक बाघ की शिकार करते समय गलती से घोड़े की नाल के आकार के चट्टान पर ठोकर खा के वो नीचे कलाकृति के अध्ययन से के तरफ गिर गए। उसके बाद उसका अध्ययन करते हुए इतिहासकारों ने वो पुरातत्वविदों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इन गुफाओं का वाकाटक राजवंश इससे संबंध था। There are also some historians say that Ellora monuments were built during the Hindu dynasty, such as Rashtrakuta dynasty, which constructed the part of the Hindu and the Buddhist cave, and the Yadava dynasty, which constructed the numbers of giant caves. राष्ट्रकूट राजवंश और कलचुरियों ने एलोरा के हिंदू और बौद्ध गुफाओं के कुछ भाग का निर्माण कराया और यादव राजवंश ने कई जैन गुफाओं के निर्माण कराए। ये एक दूसरे के करीब बनाए गए थे और प्राचीन भारत में मौजूद धार्मिक सद्भाव को दर्शाते थे। The Ajanta caves are mentioned in the memories of the several medieval era of the Chinese Buddhist traveler. They were covered by the jungle until they accidentally discovered and brought to the Western attention in 1819 by the colonial British officer Captain John Smith on a tiger hunting party. अजंता एलोरा की रचना। ये गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो आज संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, में स्थित है, जिनके बीच की दूरी करीबन 100 किलोमीटर है। गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट और सातवाहन द्वारा किया गया था। उनके वास्तुकला कौशल्य और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करता है। It is also said that the Krishna I, reigned in 1756 to 1773, was the king of the Ellora caves and built the rock temple Kailasha at the Ellora, designated as a UNESCO World Heritage Site in 1983. Another king, Amok Varsha I, who reigned from about 1814 to 1878, was the author of a part of the Kaviranjamga, the earliest known as a Kannada poem. क्या आपको पता है एलोरा का पुराना नाम वेरुल लेनी था? स्थानिक रूप से वेरुल लेनी नाम से जाने जाने वाले एलोरा गुफाएं औरंगाबाद जिला के मुख्यालय के उत्तर पश्चिम में चालीसगांव रोड से करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर है। एलोरा नाम एक प्रत्येक व्यक्ति के प्रेरित करता है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी चट्टान को काटकर बनाए गए मठ मंदिर परिसरों में से एक है। एलोरा विश्व की सबसे बड़ी एकांश व उत्खनन विशाल
कैलाश गुफा, जो गुफा नंबर 16 के लिए भी विश्वविख्यात है। इन गुफाओं में आने का भरपूर आनंद मानसून के दौरान उठाया जा सकता है, जब प्रत्येक नदी वर्षा जल लबालब होते हैं तथा समूचा वातावरण हरा भरा होता है। इस स्थान पर मानसून ही वर्ष ऋतु नहीं होती। स्थानिक लोग पूर्ण पुष्टि प्रकृति का छटा को निहारने के लिए भी इन आदर्श स्थानों पर आते हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र के ज्वालामुखी बैसल्टी संरचना से कटकर बनाई गई है, जिन्हें देखने ट्रेप कहा जाता है। ट्रेप शब्द 19 मूल का है। ज्वालामुखी निष्पेक्ष सीढ़ीनुमा संरचना को दर्शाता है। Do you know Ellora's ancient name was Ellurapuram? Ellora was also called as Verul, or Ellura is a short form of the ancient name of Ellurapuram. As you know, Ellora cave, locally known as Verul Leni, is located on the Aurangabad Chalisgaon road at a distance of 30 kilometers northwest of Aurangabad. The district headquarters, the name Ellora itself inspired everyone as it represents one of the largest rock heaven monument temple complex in the entire world. जिन पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई है वो दक्कन की सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा है। भूवैज्ञानिक कालावधि लगभग 65 मिलीनियम वर्ष पहले खटियम, जिसे क्रिटिशियस युग के समानकालीन है, ये पहाड़ियों के दक्षिण एवं पश्चिम के पास पड़ोस के पठारों के विषम रूप से उठाई गई है। गुफा परिसरों में काटने के लिए पश्चिम भूतल का प्रयोग किया है। पहाड़ियों में से अनेक सरिताएं भी निकलती है। उनमें से मुख्यतः एलगंगा है, जो गोदावरी नदी की संरचना में के शिव की सरिता से मिल जाती है। एलगंगा मानसून के मौसम में अपने पूरे यौवन पर होती है, जब महिष्मती के निकट ही प्रतिकूल धारा के बैराज के ऊपर से बहने वाली प्रवाहमान जल धमाके से गिरने वाली जल प्रत्यय के रूप गुफा नंबर 29 के निकट सीता की नानी पर पहुंच जाती है। Rashtrakutas. The patronage of the Ellora monuments include Rashtrakutas, Kalichuras, and Chalukyas, and the Yadavas. The Rashtrakuta dynasty and the Kalachuras constructed the part of the Hindu and Buddhist cave of Ellora, and the Yadavas dynasty constructed the name of the Jain caves. अगर आप इस गुफाओं में कैलाश मंदिर की संरचना देखें तो दुनिया के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है और ये सबसे बड़ी रॉक कट संरचना है। पल्लवों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रकूट वंश ने के कृष्ण प्रथम आर 756 से 773 ईस्वी द्वारा निर्मित किया। इसे एलोरा की भव्यता को और बढ़ा दिया, जिसे कृष्ण के पर्वतिथि दुंतदुर्ग प्रतिद्वंदी पर अपनी जीत के बाद राजधानी बनाया था। सी में चालुक्य 753 में
कैलाश दक्षिण द्रविड़ मंदिर शैली का सबसे उत्तरी उदाहरण है। कांचीपुरम में भी कैलाशनाथ के समान है। ये एक पंचायतन का पांच तीर्थ मंदिर है। जैसे इसका नाम से पता चलता है कि हिमालय के शिव के पौराणिक निवास के नाम पर है। मंदिर शिव को समर्पित था और वास्तव में उन्हें पृथ्वी पर अपने महल के दौरा की कोशिश की होगी। ये वास्तुकार के इरादा था। मंदिर के नीचे स्थित शिव के पर्वत के नीचे फंसे रावण के नक्शेदार दृश्य द्वारा समर्पित है। पूरे मंदिर में एक ऊंचे मंच पर स्थित होने के अतिरिक्त पर्वतीय प्रभाव प्राप्त होता है। The Ellora caves are a complex of a rock-cut temple and the monastery located in the Aurangabad district of Maharashtra, India. The caves were built between the 6th to 9th century CE. The Ellora caves not only bear the witness to three great religions, Buddhism, Brahminism, and Jainism, but they also illustrate the spirit of the tolerance characteristics of the ancient India, which permitted these three religions to establish their sanctuaries and their communities in the single place, which thus serve two. The 33 Ellora rock sculpture nearby are in an equal pathentic state, carved out of the Pronax rock. The sculpture include the famous Kailash temple, which is the largest monolithic rock-cut temple in the world. The damage began around 200 years ago when the local inhabited used their cattle in these caves. Dashavatara Cave, cave number 15 at Ellora depicts the 10 avatar of Lord Vishnu. There is the Rameshwar Cave in Cave 21 and Dhumar Leni Cave, Cave 29. There are total 17 caves at Ellora that belongs to Hindu religions. It is believed that artists had to move around 300 million cubic feet stone, weaving 2 lakh stones, 2 lakh ton of encaved the temple. It was built by the Rakshatura king called as Krishna I, situated in the south of the Prians. These caves are estimated to have been built during 600 to 730 CE. Even one Bengali movie called Kailashaniri Kelankari in Bengal was spelled as Kailasho Kelankari is an Indian Bengali thriller film directed by Sandeep Ray based on the novel of the same name by Satyajit Ray. The film was released on 21 December 2007. Satyajit visited the famous Ellora caves near Aurangabad around 1940 to 41. There are over 700 steps in the Ellora caves. However, the site is visited from the exterior of those who don't wish to go into the caves. Ellora cave
resulted from the rock excavation. It was significant site and demonstration of the religious harmony in Indian astrological. There are lots of caves in the Indian Ocean. If you go through the oldest cave, it is called as a Barabel Hill Cave. The Barabel Hill Caves are the oldest surviving rock cut caves in India, dating from the Maurya Empire 322 to 185 BCE. Some with Ashokan inspiration, located in the Magdumpur region of the Jahanabad district, Bihar, India, 24 kilometers and 50 miles north of Gaya, Bodh Gaya, where Buddhists worship themselves over there. In Ellora caves, there are total 34 caves in order. These consist the 12 Buddhist cave means 1 to 12 are Buddhist. 7 after that, cave number 13 to 29 belongs to Hindu, and 5 Jain caves from 30 to 34 caves. Ellora. With this uninterrupted sequence of the monument dating from AD 600 to 1000, bringing the civilization of the ancient Indian of a life, means if you see there are 17 Buddhist caves and total 12 Hindu caves with 5 Jain caves. One famous example of this monolithic temple that was built by the cutting mountain rock is the Kailasha temple located in Ellora. The temple was built during the 8th century by the Rashtrakuta dynasty, and it is considered one of the most impressive examples of a rock cutting architecture in the world. The temple was carved out of a single piece of a rock which executed from the vertical cliff face, means up to down. This is the first temple which was built from up to coming down. The process of carving this temple cut out of the rock could have been enormous undertaking, requirement skill and the labor and the splashes too. The Kailash temple is an Hindu temple and dedicated to the god Shiva. It is designed to remember the Mount Kailasha, which believed to be the home of Shiva according to the Hindu mythology. The temple is made up of multiple levels with the central shearing and that surrounded by the courtyard, various other structures. The intricate carving, the sculpture that adorns the temple walls and the ceiling are considered some of the finest example of the Indian art. They dispatch scenes from Hindu mythology as well everyday life during the time of temple was built. The Kailash temple is the treatment of a skill and integrity of an ancient Indian art scenes, and the builder who created it is also the testament of enduring power of faith and dedication those who build it. If you visit over here, the ticket cost for the Indians are 35 rupees. The foreigner visitors are rupees 550. The SAARC visitors, SAARC countries are 35 and BIMSTEC are 35.
एलोरा गुफाएं के प्रवेश शुल्क जो है ये भारतीय नागरिक और सार्क देशों के लिए, जिस तरह सार्क देशों में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान, और बीमस्टेक देश जैसा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के पर्यटकों के लिए 30 से 35 रुपया लिया जाता है। यानी भारतीयों से 30 और सार्क देशों से 35 रुपया लिया जाता है, और अन्य विदेशियों सैलानियों से करीबन 500 रुपया प्रति व्यक्ति इसका एक एंट्री फी ली जाती है। If there is a question how to reach to Ajanta and Ellora caves, so there are the 3 ways that you can travel easily. First of all, the nearest airport is in Aurangabad itself, is hardly 30 kilometers away from the Ellora. You can easily get cab or the state board buses from airport to Ajanta and Ellora. Secondly, if you travel by the railway station itself, the railway station in the Aurangabad is also nearby 30 kilometers or 25 kilometers from this area, and easily from there also you can get cab or state board buses which can easily lift you till over here. And by the road, if you are traveling, so it's the best that you can get connected, because being an historical place, it is well connected to all over areas, and lots of buses like city buses and even the tours and travels run their buses over this route with Volvos and well luxury buses you can find over to connect to your areas. Thank you. एलोरा पहुंचने के लिए आप हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन या सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। औरंगाबाद के चिक्कल थाना हवाई अड्डा एलोरा के निकटतम हवाई अड्डा है। ये भारत के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ता है, जैसे औरंगाबाद के लिए जयपुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली और उदयपुर से नियमित उड़ानें उपलब्ध है, और वहाँ से एलोरा की गुफाएं के लिए बस या टैक्सी मिल सकती है, जैसे एलोरा पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी, आप अगर रेलवे से आते हो तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के अलावा जलगांव रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो एलोरा से 59 किलोमीटर दूर स्थित है। इन रेलवे स्टेशनों से भी देश के प्रमुख शहरों की ट्रेन मिल सकती है। और अगर आप सड़क मार्गों से आते हैं तो सड़क मार्गों से जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बसेस जो है, वो उसके काफ़ी सारे सुविधाएं औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। हर 20 मिनट पे आपको हर एक मोहल्ले से, हर एक राज्य से, गांव से बसेस औरंगाबाद के लिए मिल जाती है। Thanks for watching this video. If you like it, please like, share and subscribe with your beautiful comments. Thanks once again.